हेलो हेलो। एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है सबको? हेलो ब्रो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? So yesterday night we hit our TP in GBP, USD JPY. Okay, so now this trade is inactive and this trade also is inactive. Today we'll find fresh entries. Okay, and BTC also, we hit our target in night only. One 106 levels, 106,000. Okay, by just risking 350 points, we captured 2000 points. Okay, so I'll just update my trade history over here. Total trades taken equals to 3 now, and 2 wins and 1 break even. Let's find fresh entries for today. So yesterday we were live in the New York session while the news was there, and as you could see, no such movement was there. Even after the Powell speech, no movement was there. After 12 p.m. in the night, the move came 1.5 hours after the Powell speech. Okay. So after that, you know what happens, manipulation. Full on. Price goes up and drops down again. So to begin with today, we'll start with the higher time frame analysis first. So clearly, as you can see on the daily time frame, the bias has shifted from sideways or bearish to bullish now. Okay. So we should look for buys entries only. But if you see here, this zone, okay, and just drop it here, it almost matches the same. So slight chances are there
that price can come down, and also a liquidity zone is there over here. Okay, which was like just tapped and bounced, tried to reject it, but that didn't happen. Now it is in the range and rejecting from the midway level. Okay, let's see. We'll find the best entries only. Time frame daily. On the 4 hour, if you draw this kind of trend line, you can clearly see there is a breakout. Okay, and now price is coming down. Okay, usually I draw trend lines in a parallel channel, but just because it is in a straight line, I didn't use it. Here the breakout has happened. Okay, and it's sustaining also. Now if you see on the 1 hour, you can see that it is taking a pullback currently, and it has not broken any previous low. I'm talking about this. So there are higher chances than that we can see gold going up again. Now if we come to 15 minutes time frame, you can clearly see that gold currently is in downtrend. Here you can see. Okay, so this candle is very important. It will like define that price will again go up or it will continue go down by just creating a lower high. On 5 minutes, there is a clear change of character and a market structure shift. We just need price to come back down somewhere so that we can plan for buys if we actually want it. Let's see on 3 minutes. Okay, so we'll wait for this level. From here we can plan for buys if we see any candle confirmation or anything. SL will be only 30 pips and we can target accordingly. Okay, so if you're watching the charts, just remind me. I'll move on to the other pairs and do the analysis. Okay, so crude oil trade was also activated yesterday, but we didn't see any candle confirmation. Okay, like a good candle confirmation to enter, so we didn't enter crude oil trade. And after it has gone up again, it came down and then started falling, and it's hovering around it near the enter only. So we have not entered anyone. DXY, what you will do with DXY?
DXY is down. It's broken the previous support. It can continue going down. That's why I told you that we need to see that if we find good gold entries, then it will be more beneficial. Euro JPY. Okay, so GG is in continuous downtrend. And we need a pullback somewhere, like it is giving a pullback, but in order to sell we need something solid. So if you see like this, price couldn't close below this level on higher time frame. So if price comes down and gives a pullback from here and like this, then we can plan for sell entries. Arjun P. Kalesh, I've given trade in gold, brother. Here you see. We are waiting for this area or zone to be tapped out, then we can enter buy trades. We can enter now also by placing a small SL. Let me check how much is the SL. Just a second. $64, 62. Okay. I guess it will be better if we wait for our price to come down. Okay. Do we have any news today? Let me check. Okay, so 12 p.m. we have CHF in 34 hours CPI. It can bring a good change. And 7:30 we have job openings. Okay. We can do one thing. We can enter a buy trade over here at the current price. Okay. Let me shift to 3 minutes.
and I'll simply enter a buy trade over here by just placing our stop loss just below this level. Okay, so almost 25-30 pips SL is there. Let's make it a little big. 25 pips SL is there, small SL, but let's see. Let this candle close, okay, above this candle high, then we will enter. Okay, because no closing has been there since these three candles. Let it close first. Six people are watching. Everyone please like this stream. सबको like कर दो यार. If we get a candle closure above this, then we will enter here only, otherwise we will wait for our initial level. Okay, so gold trade is given. Let's move on to other pairs. GJ, I told you what to do. If we see a breakdown at the downside, then we will plan for. At the retest, we will plan for sells. Euro USD, yesterday I gave you this level, but this level is currently active also. Same level for now. Guys, if you want me to send these levels to Telegram group also, we have a Telegram where we send these levels. Just DM on the number that is floating above and I'll add you in the group. At 3364. SL is 60. That would be, yeah. If you entered over here and your SL is there, 50 pips SL is there, no issues. Let's just
wait and let the trade play out. Price is coming down to our initial level. Okay, the price is tapped in. Now let's wait and see if we find any bullish confirmations or not. We will wait and watch. I'm maintaining on 1 minute time frame. If we see any engulfing candle or huge rejection candle, we can enter. But for now, it's continuously going. 10, 15 seconds left for this candle closure. Let's wait and see. Arjun, did your SL got hit at 60? What lot size did you take? See, a straight fall is there. Okay, on 5 minutes. So more 2.5 minutes are left for the candle closure. Let's wait and see if it reverses or not. $0.01. So you had a loss of $4.5. On 1 minute, is this reversing? If I can show you. Yes, on 1 minute it is completely engulfed. Okay, we can enter over here with a sell of again 30 pips at the bottom. I'll remove the top trade. Okay, I have entered personally. Now let's see. Only 30 pips sell is there.
Now this trade is active. Let's see if we hit our SL or TP. Let it run. How many for I entered at 62? Where can I keep the SL? 30 pips, bro. 3358.50 will be a good SL. Okay. The remaining guys, did you enter the trade? 6 people are watching. Please like the stream. And इंडिया में कहाँ से हो सब बताओ. कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? And currently you are in loss or profit. Six people are watching. सब स्ट्रीम लाइक कर दो. Arjun P. Where are you from, brother? कहाँ से हो?
from Kerala. Okay. Chalo, price is going up. Let's put a magnet over here so that our TP comes fast. Other 7 people who are watching, please engage in the live chats. Arjun bro, if you want to get access in Telegram group from where you can see the trade updates on all the trades are updated, just DM on the number. I'll add you. Okay, we are already 40 pips up. दूसरे स्ट्रीमर्स क्या करते पता है? 20-30 पिप्स है ना, दे बुक द पोजीशन है, बहुत प्रॉफिट हो गया, ऐसा ऐसा बोलते हैं. 20-30 पिप्स इन गोल्ड इज बहुत इजी. ठीक है, ऐसे नॉर्मली 20-30 पिप्स आ जाता है. So even a child beginner can capture that. 50 pips or above, if you can capture, then okay, you're going somewhere. Let's wait patiently. अब कुछ कर नहीं सकते. ट्रेड एक्टिव है. 1 minute 20 seconds left for 5-minute candle to close. Let's look for other pairs. BTC BTC BTC. मिनट पे BTC नहीं देखने का. 15 मिनट्स पे अपना कल का ट्रेड को हटा देते हैं. And now for fresh entries, as I told you yesterday only कि BTC कैसा बिहेव करता है. ये एक न्यू हाई इसने क्रिएट किया था. Okay, and it came down. अभी again it created a new high
and probably it should come down somewhere here or somewhere here, then we will plan for buys, but let it come down first, क्योंकि BTC का कुछ फिक्स नहीं है, it can go up from here also. Ethereum, Ethereum, as I told you, yesterday only I told you that it will reverse from this point, and that only happened, but we didn't take any trade because yesterday we were in three trades, our three trades were active. So according to my personal rule, I didn't take that trade. But if we see theoretically, we took four trades yesterday, and out of those, three were profitable and one break even. So let's suppose I didn't enter this trade, ठीक है, मैंने personally तो enter नहीं किया इसमें, but I have updated this in Telegram group, ठीक है, our personal members जो हैं उनको I have updated this कि you can plan from this area. So अगर if you want to get access in that group, just DM me on the number, I'll add you in the group. I'll start journaling this also. After this stream, I'll journal every trade in Excel sheet or somewhere to keep. Let's see gold. Gold उधर ही होल्ड कर रहा है. Who all are watching the live stream? I can see Arjun and Yatin. बाकी और कौन है? Two minutes are left for candle closure. DM यतिन देखो, स्क्रीन पे फिनासिक्स ट्रेडिंग लिखा हुआ है ना नीचे में बॉटम में, उसके लेफ्ट साइड में देखो नंबर दिया हुआ है, उस पर करो, या फिर टॉप में देखो स्क्रोलिंग जो लाइन चल रहा है उसमें भी नंबर है. लेट्स सी लास्ट 1 मिनट में पलट के ऊपर जाता है या नहीं. 3360 से लिया है, 60 बढ़िया.
What is your lot size, you think? Great. Okay, so let's wait for price to hit our target. Nothing else we can do. SL भी same है, TP भी same है. SL we can trail if we see that okay price has, अगर यहाँ पे अपने को closing मिलता है ना, like here we see any closing above this, then we can trail our SLs to break even. Target is 170, 370. Okay, I'll be back in few minutes. Just monitor the trade. I'll be active only.
ट्रेड में अभी तक। We'll simply wait either our SL or TP, no issues. SL भी छोटा है, 30 pips का ही है. Where are you placing your SL, brother? I told you 58.50 you keep your SL. Like, don't panic, okay, while you are in trades. Okay, don't panic. Either you hit your SL or TP. Okay. Now our SL is hit. Okay. So we took a SL in gold 30 pips. So I'll update this also. Total trades taken are 5, and now we have lost one trade. Now we have to wait. Nothing we can do, because if the price is going down only, because if you see like this on 30 minutes, this is a area from where it reversed. So it mitigated a bit and was going up, but it's coming down. So let's wait and see that it is supported or not. Otherwise, this is a clear indication that price can go down only. If I show you on the daily time frame, let's remove this and this. See, price can come down to at least 50% area also. Okay, that means this 3340. That is very much possible. Then it can go up. Okay, this happens a lot of times. Okay, if you see other days also, it happens a lot. Okay, like this, if you see over here, it was a clear buying candle, and next day the price came down almost 70%. Then the next day it started going up. So this happens a lot. Let's see other pairs. Euro JPY is going up slightly.
USD CHF. USD CHF looks good according to the liquidity grab zone, but it's kinda not holding over here. It can come down a bit, then it can start reversing up. No, this level is also not valid. Let's see previously. So as I told you, not holding very much, so it can go down only. We should look for sells at pullbacks. कहाँ तक रिवर्सल? क्या रिवर्सल? अपसाइड या डाउनसाइड रिवर्सल? देखो गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है ना, गोल्ड ऊपर जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली स्विस 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 विल फॉल डाउन. ठीक है. गोल्ड इज मेजरली बैक्ड बाय स्विस फ्रैंक. ओके, तो गोल्ड ऊपर जाएगा तो स्विस फ्रैंक को नीचे जाना ही है. स्विस फ्रैंक जब स्ट्रांग होता है देन ओनली गोल्ड गोज अप मेजरली. तो जब कोई भी करेंसी स्ट्रांग होती है इट गोज डाउन ओनली. कहाँ तक पुल बैक, कहाँ तक पुल बैक वी कैन सी इज see according to Fibonacci, considering this as low, our level will come out to around this zone. ठीक है, which is also a level aligned with liquidity grab. okay, अगर यहाँ पे देखेंगे तो there is a pool of people. okay, यहाँ kind of consolidation हुआ है, and if it breaks upside, if it breaks like this and taps into this zone, then we can see a selling. But I am not considering this कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा. अभी it can come down a little bit also, then it will create a new low. From there we will see. ठीक है, अगर यहीं से जाता है then I told you the level. ठीक है, and we can capture a great move downside. एक न्यू लो अपने को देखने को मिलेगा. ठीक है, and remember this is on 4 hour time frame. तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग नेक्सटनेस सॉफ्ट फ्री अकाउंट देन ओके, लेकिन बाकी कोई ब्रोकर में जिसमें सॉफ्ट फ्री नहीं है एंड फंडेड अकाउंट्स यू आर ट्रेडिंग, देन उसमें ही ट्रेड मत लेना. अदरवाइज जितना प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा स्वैप चार्जेस कट जाएगा.
देखते हैं यहाँ से गोल्ड कुछ मूवमेंट शो करता है। ये न्यूज़ क्यों आया पता है? सॉरी, ये मूव क्यों आया? 12 PM न्यूज़ था एंड वी फॉरगॉट। अपने को ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देना चाहिए था। सी, स्विस फ्रैंक गोइंग अप, गोल्ड कमिंग डाउन। देखो 12 बजे इसने मूवमेंट दिया, सिंगल बिग कैंडल, एंड ऑपोजिट में गोल्ड को देखो तो इसने भी सिंगल डाउन साइड। दोनों भी वो 11 पे 110 पिप्स का है एंड ये 130 पिप्स का है। तो ये अगर नया है स्ट्रीम पे देन प्लीज लाइक द स्ट्रीम। Apart from this, any of you guys have any other questions, you can drop down. How many of you are active in Discord? We'll wait for the levels. Okay. When anything is there, I'll let you know. We'll be live only. If you have any questions, just drop it down.
I guess gold is in trapping mode today only because here was a good buying level because of the wick pending to be filled out. But after that wick filling out, we should have seen a good rally up. बट यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ 100 पिप्स तो इट गेव बट अगेन इट्स कमिंग डाउन ठीक है सो कंटिन्यूसली इट्स ट्रैपिंग अभी यू विल से दैट ठीक है 100 पिप्स तो दिया बट 100 पिप्स कम्स विथ व्हाट अगर दिस वाज योर जोन तो ऑब्वियसली तुम जोन के ऊपर एंट्री करने वाले हो तो जोन की एंट्री जब तक ऊपर आएगी एंड कंफर्मेशन मिलेगी यू एंटर यू ओनली गेट 50-60 पिप्स जिसमें यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड एंड नेक्स्ट कैंडल में ही इट कम्स डाउन टू योर ब्रेक इवन ठीक है यहाँ पे भी सेम हुआ वी एंटर्ड एट ब्रेक इवन लेवल ओनली एंड इट गेव ऑलमोस्ट 45 पिप्स एंड नेक्स्ट कैंडल में ही नीचे आ गया पूरा सो जनरली ये मंडेज को देखने मिलता है इस टाइप ऑफ ट्रैप्स और काइंड ऑफ साइड वेज ट्रेंड बट आज क्यों हो रहा है आई डोंट नो बिकॉज आज न्यूज़ भी है अभी जेपीवाई की न्यूज़ है that will not affect much but 7:30 p.m. we have job openings which sometime affects because अगर job openings ज़्यादा अच्छी होती है then gold comes down a bit and ये जो इन्फॉर्मेशन है दिस ऑलरेडी रिवॉल्व्स अराउंड द मार्केट पहले से ठीक है 12-27 आवर्स 24 आवर्स पहले से मार्केट में आने लगती है दैट ओके दिस फोरकास्ट विल बी एक्यूरेट टू दिस पॉइंट कौन लाइव देख 5 people are watching Yatin are you still there Arjun so we'll simply wait for our this level only from here if we see any confirmation and all we can plan 345 yeah 346 345 zone और बताओ यतिन अर्जुन पी कब से कर रहे हो ट्रेड एट लॉसेस प्रॉफिट क्या हाल है 4 months great only loss how much loss अभी तक कितना कर दिया टोटल 3.5 lakhs
और 1000 या $3.5K। व्हाट अबाउट यू अर्जुन, क्या हाल है तुम्हारा? लैक्स। करंट कैपिटल क्या है? हाउ मच यू लॉस्ट? 10,000। 10,000। सो एक्सनेस में तुम लोग क्या INR में अकाउंट रख के ट्रेडिंग करते हो? आई एम ट्राइंग टू क्लियर माई फंडेड अकाउंट, ओके। विच फंडिंग पिप्स? फंडिंग पिप्स का क्यों लिया अर्जुन? इट कम्स विथ कंसिस्टेंसी रूल, एंड उससे सस्ते में भी बाकी अच्छे प्रोफॉर्म्स है। लाइक पर्सनली फंडिंग पिप्स से बेटर फंडेड नेक्स्ट इफ यू वांट टू पुट इन द मनी ओनली। ठीक है, लाइक यू गेट द फ्रीडम। कौन से? यतिन यू कैन ऑल्सो डू फंडेड अकाउंट, बेटर पड़ेगा। लाइक यू हैव लॉस 3.5 ना, तो इट कैन बी टेकन आउट विथ। किसी का क्लियर किया था पर उसने अकाउंट नहीं दिया। ऐसे नहीं लेने का ना उल्टे फुल्टे किसी का भी। DM me ऑन द नंबर, मे बी आई कैन हेल्प यू। कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, हाउ टू पास। I cleared 3 days with the rule। वो फंडेड अकाउंट क्लियर करना इजी है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज कि अगर किसी में कंसिस्टेंसी रहता है, ठीक है। अभी कंसिस्टेंसी रहता है तो यू हैव टू पुट इन द डेज, मतलब इतने दिन करने ही पड़ेंगे। और बाकी दिन पे क्या है कि और द सेकेंड प्रॉब्लम इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज। अभी किसी में 3 डेज है या 5 डेज है, तो दैट्स जस्ट नॉट 3 डेज और 5 डेज, दैट काउंट्स एज 3 और 5 प्रॉफिटेबल डेज। 3 प्रॉफिटेबल डेज में भी 0.5% पर डे बनाना पड़ता है। दैट इज़ डिफ़िकल्ट।
करवाते तो सभी है ना, देखो। प्रॉफर्म्स आर बी बुक मेजोरिटी, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज काम करते हैं ना, टेक मनी फ्रॉम 10 गिव टू 1, वैसे ही है। तो कोई स्मॉल प्रोफर्म है या फिर नया है, ठीक है, तो दे ट्राई टू गिव मनी टू पीपल जो बिगिनर लेवल पे होते हैं, ठीक है। बट जो पुराने हो गए और नहीं चले हैं वो नहीं देते। बाकी बड़े प्रोफर्म जैसे अर्जुन ने फंडिंग टिप्स लिया है, तो दे गिव द मनी। फंड इंडेक्स देता है, गोल्ड फंडेड देता है, फंडेड ट्रेडर मार्केट देता है, विजन ट्रेड देता है, नियोमा देता है। नियोमा जैसे न्यू अभी आ रहा है, ठीक है, उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हुए हैं, तो वो अभी देगा, अच्छे खासे दिन देगा। उसके बाद इफ़ दे फेल टू गैदर दैट ऑडियंस जहाँ से उनको इनकम नहीं आ रहा है, देन दे विल नॉट गिव, सिंपल है। तो उसी प्लेटफॉर्म के साथ जाओ जिसका ऑलरेडी कस्टमर बेस अच्छा है, वो देंगे। तो बहुत लोग गार्डियर का लेते हैं, गार्डियर पे आउट नहीं दे रहा, 2 महीने हो गए। किसी किसी को दे रहा है, मतलब स्मॉल स्मॉल दे रहा है। मैंने गार्डियर का लिया ही नहीं। मैंने फंडेड नेक्स्ट से ले रखा है, गोल्ड फंडेड से ले रखा है, फंडेड ट्रेडर मार्केट से ले रखा है। क्वांटिकल से एक बार लिया था, बट उसके रूल्स बहुत टफ है। मतलब लाइक इन्फ्लुएंस मार्केटर मार्केटिंग करके वो बड़े बन गए, लेकिन उनके रूल्स बहुत गंदे हैं। मैवन से ले रखा है। फंडर प्रो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट सेकंड फेज में आके फेल कर जाता हूँ। सो डिपेंड्स ऑन यू गाइस ऑल्सो कि क्या सूट कर रहा है, कौन सा प्रोफॉर्म सूट कर रहा है, बिकॉज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे फंडर नेक्स्ट में फुल ऑन फ्रीडम है, कितने लॉट मारो, कितने पोजीशन मारो, कितने एक दिन में कुछ भी प्रॉफिट करो, डजेंट मैटर। बॉट लगाओ, कुछ भी करो, बट बाकी में नहीं है। इसमें हम क्या ट्रेड करेंगे, कुछ मूवमेंट्स है ही नहीं। सो अपने सेलेक्ट हो गया एंड रेंज में फंसा रहा है। दिस इज आवर लेवल।
स्टिल चांसेस आर देयर कि यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, बट लेट्स नॉट टच इट नाउ, बाद में देखेंगे. 5 people आर वॉचिंग. और किसी में ट्रेड बन रहा है क्या? जीजे, लेट्स सी. जीजे नीचे आया अच्छा खासा, देखते हैं. लेट इट ब्रेक, ब्रेक एंड रीटेस्ट होता है, देन वी विल सी. ठीक है. डायरेक्ट ब्रेक डाउन पे भी हम लोग एंटर कर सकते हैं, बट आवर एस एल विल बी वेरी लार्ज. अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ रेंज में फंसता है, देन इट गोज डाउन, देन वी कैन एंटर. स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कांट एंटर. अगर कोई न्यू है तो प्लीज़ लाइक द स्ट्रीम. For next, I feel if we fail multiple times, we pass the challenge. Can it give account? नहीं भाई, वैसा नहीं होता. The sole purpose of funded firms is to make profit. अभी वो आप लोग को अगर अकाउंट्स देते रहेंगे फ्री में, देन हाउ विल बी दे मेक प्रॉफिट. जी जी स्ट्रेट फॉल कर रहा है. टॉप जी, हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? यूएसडी जेपीवाई, जी जी, ओके. कल ये लेवल दिया हुआ था, इट्स स्टिल एक्टिव. यहाँ पे आता है तो वी विल प्लान फॉर बाइस. BTC, इथेरियम, BTC if comes down to this level we can plan for buys.
6 people are watching. भाई लोग प्लीज स्ट्रीम को लाइक कर दो. यूएसडी CHF. यतिन भाई बताया था ना, यूएसडी CHF ऊपर नहीं जाएगा. इट्स शोइंग a sign of reversal, but gold is going up, so it should go down only. US oil. I'll be back online. कहाँ से लेके रखा है? 0.01 कहाँ से ले रखा है? बाइज में या फिर सेल्स में? अभी कोई फ्रेश एंट्रीज मेरे को नहीं लग रहा बनेगा टिल न्यूयॉर्क सेशन. न्यूयॉर्क सेशन में वी कैन फाइंड गुड ट्रेड्स.
रेंज फॉर्मेशन में फंसाएगा। चलो, I'll end the stream. See you all in 5-6 hours. Okay, evening में आते हैं.